Then, hello learners. Good evening, boys and girls. I welcome all of you to the second lecture, YouTube live lecture of automata theory. And if you have not watched the first video, the first lecture, my appeal is that you watch that 1 hour lecture and then visit this particular class. So, but anyway, you are live now. But my appeal is that you need to watch that 1 hour lecture to keep the continuity. We were learning about the topic deterministic finite automata DFA last time, and I defined what is DFA. Conventionally, we defined DFA. There were a lot of Greek symbols in the definition, and I gave you two examples of DFA, how DFA looks like and what it does. What we did not see last time is how to design a DFA. What I did is I actually had figured out DFA in front of you. I have drawn the DFA and I was explaining what this DFA does, but I did not explain design of the DFA, how we design the DFA. Now, some preliminaries before we continue today. Imagine that this box is the DFA, deterministic finite automata. By the way, what do you mean by automata? Recall, machine. So imagine this is a machine. Automata means machine, and we have a machine. The input given to this machine will be a string. Some string we will give as input to this machine, and what the machine will output. Obviously, every machine will have some output. The output given by this machine will be either yes or no. We call it as accept or reject. Look, I'm just revising a few things that we learned in the first YouTube live lecture. What are we learning exactly? We are learning how to build a machine that's named as deterministic finite automata. You can consider this as a black box. We up till now we don't know what is inside this machine, but there exists a machine which takes the input as a string, some string, and the output given by this machine is either yes or no, accept or reject. Let's take some examples. Imagine that we give some input, which is a string, of course, but that input is made up of only two symbols, A and B. That means the input symbols, is made up of A comma B. I have drawn it as a set. So which string are you allowed to input? Any string which is made up of A and B or both. For example, I can give a string like this, A, B, A, B, A. This is a string I have given as the input. I cannot give this input as a string. You watch. A, B, C, D, A, B, X. No, no, no. I can't give this input because it is said that the input symbols is made up of A, B. Only these two symbols constitute or contribute to the input string. Are you understanding? So such strings are not allowed. Any strings which are made up of A and B, any combination of A and B, any length, we can give as input. Okay. Now what is DFA going to do? There is going to be a rule here inside the DFA. I repeat, I am just revising what we learned last time. Okay. Just in short. Inside this machine, there is going to be a rule. And if that rule is obeyed by this string, if this string obeys that rule, then that string will be accepted. That is, yes will be the answer. But if the string disobeys the rule, if it does not satisfy the rule, then the output given by DFA is no. Obviously, because it is not satisfying the rule. Let's take an example. We want to build a DFA or machine which will accept the strings that end with
strings that end with A. Suppose we want to accept all such strings which end with A. Suppose we have given this string. It is ending with A, correct? So what should this DFA output? Yes. Look at the string. What is the rule we want? The string should be accepted only if the string ends with A. So if you give such a string, DFA must answer yes. But what if I give this string? Just imagine AB, AB. Note this string is also made up of AB. Remember, input is any string made up of combination of AB. But what is the rule of DFA? What is the rule of this machine? That the string will be accepted only if string ends with A. So if you give AB, AB as the string, look, it is ending with B. So what should be the output given by DFA? No, that is reject. This is just one example I am saying. We still don't know what is there inside the DFA and how we achieve this. Now just imagine we design a DFA with this rule: accept the strings that begin with A. So the first letter should be A. And what is the input? Input can be any string made up of AB. So suppose you give this string AB, AB. What should be the output given by this DFA, which is having a new rule? It is another DFA, another machine which is checking this rule. Output should be yes. Whereas if I give the string like this, B, A, B, A, Baba, then the output should be no. Because we want DFA to accept only those strings which begin with A. So actually, you can think of this DFA as a machine which is doing nothing but taking a string and checking the string, okay? And then that string should follow the rule that the DFA is built for. If that rule is obeyed, then DFA says, okay, everything is okay and I accept this string. Otherwise, DFA will reject the string. One might wonder, what is the use of this? Can you just think that these machines are so important and they are there existing in computer science and we heavily require such DFAs? One example I can give is, imagine that this DFA, this DFA is a dictionary of English words. Here we go. Just imagine we have built a DFA. Okay. And the input is a string, always the input given to the string is input given to DFA is always a string. Now the input symbols here, input symbols are A, B, C, D up to Z. I hope you are understanding. The input symbols of English is any string made up of A to Z and any combination. Now just imagine I give the string apple. And the rule for DFA is that accept the strings that are English words. English words. So is this an English string? Yes. So what will DFA output? Yes. Isn't it so? Whereas if I give a string like this, imagine B, A, T, A, C, X, Y. At least I have not seen any such English word in the dictionary yet. What is it? I don't know. But you tell me, is this a string made up of A to Z? Yes. It is a string made up of A to Z. So I have given this string and I am knocking this DFA. Hello DFA, check whether this belongs to English. And what will DFA output this time is no. This does not belong to English. What do you know? I hope you have typed Word document. Huh? While typing Word document, have you ever observed that when you misspell some word, spelling is wrong,
then that word is underlined with red line. Correct? That means something is going in the background. How is MS Word, Microsoft Word able to know that this word is misspelled? In the background, DFA is working. Deterministic finite automata is working. Correct? So if you type a valid word like apple and hit space, then apple is not underlined red because DFA says, yes, it is a valid word. Whereas when you type a misspelled word, then DFA signals Microsoft Word that, hello, Microsoft Word, this word is misspelled. So Microsoft Word underlines it with red color. One application I told. See, initially, when you see such machine, you won't understand what's going on. We are giving some string and DFA says, okay, I accept it. Okay, I reject it. But why? Isn't it? Why do we need such machines? Okay, here we go. Imagine we have a DFA. Another example I am giving, DFA. Okay. And the input given here is of course a string. Surely. Input given is always a string to DFA. And the output is either yes or no. Correct? And now the input I am giving to this DFA, is all strings in my C program. Oh, what am I talking about? All strings in my C program, one by one. So imagine I have typed a C program like this, hash include angled bracket stdio.h, then int main, bracket open, bracket close, and so on, so on, so on, and here ends. C program I have typed. Now what we will do, is that we will give each and every word. This is a single word. We'll give it to DFA. And this DFA will have a rule. Of course, every DFA has a rule. You know what rule it will be? Output yes only if that word is valid C language word. So suppose I input include here, first word. DFA will say yes, okay. But what if we misspell this word? I hope you are finding this interesting. Suppose I say include like this. Oops. Now what will happen, when this first word is fed to DFA, DFA will say no. This is not a valid word. And then this word compiler, C compiler. C compiler will give an error. Word include not found, something like that. But how does C compiler know that this word is valid or invalid? In the background, there is something running, isn't it? Deterministic finite automata is designed in such a way that it knows all valid C language words. For example, there is somewhere for written, for bracket. I'm not writing complete for. And maybe I have made a mistake. I have written for like this, F-O-R-E. There is no such word. Then when this string will be given, of course, we are giving each and every string one by one. When this string will be given, again, DFA will say, no such word exists. So compiler will flag an error. Correct? So we require DFA. These are just two examples I have given. I promise, trust me, when we will go further in the course, I will give you more and more importance of DFA and where DFA exists in reality. We want to build such a machine. And last time I told you that what DFA consists of. Tell me, what does DFA consist of? DFA is defined as, DFA is a 5 tuple. Tell me what are those 5 things in the tuple? Capital Q, okay. Sigma, sigma, yeah, Greek letters. Then delta, then Q0, then F, correct, capital F. Correct. 5 things are there in which Q is finite set of states. Correct. Sigma is input symbols. Finite set of input symbols. You understand this? Finite set of input symbols means which symbols can be input. At the input, the string is made up of which symbols. Like
Our first example, the input was made up of A comma B. Recall, input was made up of A comma B. Okay, so that is set of input symbols. Okay, what next was there? Delta. What is this called as? Transition function. Correct. Transition function. Then Q0 is initial state. Initial state, and F is set of final states. Set of final states. All this was discussed in YouTube first lecture. Okay. But this is the machine and this is the description of a DFA. That black box. I have now opened it. Example 1. Just see this example. You also keep writing because now our actual class has begun, and just I was giving you importance of DFA before this particular topic, before writing all this. So here is example 1. Look how DFA looks like. We have Q0, Q1, Q2, just hold. Check this. This is our first example. My appeal again to everyone is, don't put a question in your mind that what is this doing? Okay, what is this DFA doing? Don't put a question right now. Huh? Seriously. But you know what? This is that black box which I was drawing, DFA. This is that deterministic finite automata. And we are going to give some input string. And what is the output that is going to be given by this? Yes or no? Correct. Yes or no? Okay. Now figure out. The input, which is called as sigma, this symbol is called as sigma, is finite set of input symbols. Now in this example, the input can be made up of which symbols? A and B. Why A and B? Because you can see only A and B on the transitions. So the input can be any combination of A and B. Okay. Output will be either yes or no. Correct? Which string can you give as the input? A, B, A, B, A, A. You can give such a string. Okay. A, B, C, X, Y, Z. No. You can't give such an input because input is made up of only A and B. Okay. Describe this machine. This we did in YouTube one lecture. Describe this. How many states are there? These are states Q0, Q1, Q2. So capital Q, the first element, is written as Q is Q0, Q1, Q2. 3 states are there. So have you followed? Q is finite set of states. Next, sigma. What is sigma? A comma B. What does it mean? The input given to the DFA is any combination of AB, a string made up of AB. Delta is a transition function. Okay. Now, by transition, what we mean, how and why you move in the DFA. You can see from one state Q0, you are moving to some other state Q1, then you are moving to some other state Q2. So, how and why you are moving? Now, you read it like this from the picture. If your machine is in at the moment in Q0 state, by the way, your machine can be in any of the 3 states. If your machine is in Q0, then it is not in Q1 or Q2. If your machine is in Q1, then it is not in Q0 or Q2. Correct? So machine can be only in one of the states. Imagine machine is in Q0 and it is processing A, input A, then machine moves, transits to Q1 like that. So how do you draw this transition table? Come on, we had drawn this last time. What does it contain? Rows. And what does rows indicate? Correct, states Q0, Q1, Q2. So rows of this transition function are states Q0, Q1, Q2. Now Q0 is called the initial state because there is an arrow shown here.
How do you identify initial state? Whenever there is a arrow in the beginning state. So Q0 is the initial state. In the table, we show arrow like this. Okay. Now, what about columns in this? A and B. Columns are labeled as input symbols, A, B. Now, how do you fill this transition table? If Q0 is processing A, we transit to Q1. So we fill Q1. Come on. How do you read it? Q0 processing A, Q0 state processing A, we move to Q1. Q0 processing B, let's note, Q0 is processing B. Note, we remain in Q0 itself. So Q0. Okay. Tell me what about Q1, what will be the row here? Okay, Q0, Q2. How did you get this? Q1 processing A. Q1 processing A, we will go back to Q0. Q1 processing B. Q1 processing B, we will go to Q2. What about Q2? Q2, correct. Q2 processing A, remain in Q2. Q2 processing B, remain in Q2. Okay. Now this state, which I have drawn with double circle is called final state. This is called final state. Whenever you see any state double circled, it is called as accepting state or final state. In the transition table, we draw an asterisk here to indicate that this is the final state and Q0 is the initial state. So that is the transition table. Okay. Who is the initial state, by the way? Q0. How do you recognize it? Due to that arrow. So Q0 is the initial state and F is the final state. So how do you write F? F is Q2. What is final state? Q2 is the final state. So F is Q2. This is the description of the machine. Okay, now let's come to the last thing. We have described, we have seen the machine, we have described it. What is this machine doing? What is this DFA doing? It will take input string, correct? Made up of A and B. Any string you can give, made up of A and B. When will this DFA answer yes? Can you guess? I'll give you some time. As an example, think of a string made up of AB. Think of some string made up of AB. And DFA says, yes, this is valid, this is acceptable. At least one combination of A and B. Correct. Absolutely right. Absolutely right. See, DFA will accept only those strings which has at least one occurrence of AB, substring AB. Suppose, let's say, I give B as the string. Can we give this string as the input? Yes. You will say, oh sir, but you said that string must contain AB. No, I said any combination of AB. You can have a string which is any combination of AB. So A might not be there. There are lots of B's. So this is a string we have given as the input. Okay. Initial state. Machine starts in initial state. And in every step, the machine will read only one letter. See, although we have given entire string, it doesn't mean that the entire string is consumed at once. In Q0 state, when the machine starts, machine says, I will now read B, the first letter of the string. Then Q0, look what is Q0 doing. Q0 is saying, I am reading B, and there is a transition from Q0 to Q0 itself on reading B. So after processing this B, after reading B, machine is still in Q0. Are you understanding? Machine was in Q0, that is initial state, and after processing B, where has it landed? In Q0 itself. Okay, we are still in Q0. Now our machine will read the next letter. Remember, in each step machine reads only one letter, so it is reading B. So Q0 is again reading B and says, okay, it stays in Q0 itself. Again the machine is in Q0. Then next letter is read, third letter, but we are in Q0, and what does Q0 do on reading B? Remains in Q0. Fourth letter, it is again B. Q0 remains in Q0.
then all the letters are finished, you see. The string is over, the string is complete. We can say that machine, this DFA, has consumed all the letters of the string one by one, correct? And now the machine stops. When the machine stops, in which state is the machine? In which state is the machine when it stops? Q0. Remember, we started with Q0. Oh, it's B, remain in Q0. Again B, remain in Q0. Q0, Q0. And string is over. String is finished. Machine is in Q0. Machine has not reached Q2 state. What's so interesting about Q2 state? Q2 is the final state, accepting state. That means if the machine reaches the final state after the input is over, then we say the string is valid. But at this time, the string is in Q0 and Q0 is not accepting. It is not double circled. So when the string is over, the machine is not in accepting state. So output will be no. Why the output is no? Because this string does not contain even one occurrence of AB. If there was some AB, some substring AB anywhere, then the machine would shout, yes, the string is valid. Okay. Just check. Orally, just check. What if I give the input as AB? The string is also, we can give the input. It is made up of A and B. What should be the answer? Yes, accepted DFA will say, because AB is a string which contains one occurrence of AB. Let's see how it works. Very fast, let's check how it works. I have given AB as the string. Tell me where the machine starts. Q0, correct? We start in initial state. Read the first letter. So Q0 is processing A. Q0 says I will go to Q1. Now we are in Q1. We are not in Q0 now. We are in Q1. Now Q1 is going to read the next letter B. Q0 reading B, it says I will go to Q2. Now the string is over. You see, there is nothing to read now. String is finished. So our machine will stop. In which state has our machine stopped? Q2. A followed by B, string over, machine stopped in Q2. So what will be the output given by DFA? Output is yes. DFA is saying I accept this string. Okay. Okay. Read it with me. Suppose if the string given, this is very interesting, just check. AB, 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 BB. Oh, good Lord. This is containing many occurrences of AB. But what was our requirement? At least one occurrence. एक बार भी AB होगा तो accept होना चाहिए. ये तो बिल्कुल होना चाहिए. This string should be accepted. Okay. Just check. You know what? Gradually I will come to development of this. How I got this answer. So you should be able to build DFA on your own if some new rule is given. Huh? So you should be able to think how it happens. Okay. So what is the string given? AB, 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 2 times B. AB, 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 2 times B. Okay. This is the string. Starting at Q0, initial state. Read the first letter A. Q0, reading A, we are into Q1. Here. Now, we are in Q1 and Q1 reads B. When Q1 reads B, we are in Q2. Okay. Now you only tell me, when we are in Q2, what have you discovered till now? A followed by B. Just now you see A followed by B. A, then B. That means we are in Q2 because we have got A after that B. And that was our aim. So we found one occurrence of AB. Now who cares what is there after that AB, correct or not? Who cares? Of course it should be A or B.
Then you tell me, after these two letters itself, we are in the final state. We know that the string has AB. Now what will happen? We are in Q2. String is not yet over. We are in Q2. Q2 reads A. What should a machine say? I will stay in the final state. Because of course my requirement is over. I have got the answer that AB was there. Now this third letter A says don't leave the final state. A, remain in Q2 only. Now B, we are in Q2 and it says I have already discovered AB. That was my requirement. So I will remain in Q2 itself. Next letter A, same Q2, B, Q2, B again Q2, B again Q2. Now the string is over and the machine has stopped in Q2 state. So the output is yes. Okay, let's play a game. Okay, for some time, I know you have understood this, but for some time, still there is a confusion. Why so many states? How did sir come to know Q0A should be Q1, Q1B should be Q2, and these transitions? How did sir design this? So let's play a game, okay? I am drawing this DFA as a black box and I want to accept the strings that have at least one occurrence of AB, at least one occurrence of AB. And the sigma, the input symbols are A comma B. Input symbols are AB. So same problem. I am drawing as a black box. We don't know how to develop this, but we are given the problem. So you know that the input can contain any combination of AB. It may not contain A, it may not contain B. Input given can be something like this also, A. Now this does not contain AB, then the output should be no. Input can be B. This also does not contain AB, output should be no. Any combination can be given and output should be yes only if there is at least one occurrence of AB. Now let's play the game. What I am going to do, I am going to dictate one string. But I will dictate the string letter by letter because DFA reads the string letter by letter. Okay. And you be the DFA. Think of that you are the DFA and you are taking that string letter by letter. Okay. And just think what will happen now. Okay. Here we go. And this DFA should be simulated by you. This DFA I want. The string I am giving is B. Starts with B. So you'll say, I am in the search of AB. There should be AB, isn't it? I have not got A itself till now. But I am in the search of A followed by B. But I have not yet got even A. So you'll say, okay, I will take no action. Let me be wherever I was. Okay. I have given B again. You'll say, wait, I am in the search of A followed by B. I have not yet even got A. So I will stay wherever I am. That means you have not even moved initially. You were in initial state, you are still there. Correct? Now suddenly, the next letter I dictate. Still the string is going on. String is not over. Next letter I give is A. Now you say, oh, I wanted A, B. I at least got A. Wait. I will change the state. I will not be in that state where I did not even have A. Now I am having A. So we'll say, okay, now let me change the state and go to Q1. Okay. That means till now, what you are thinking is that when we are reading the string and if the string is containing B, we have not even got one A, then we will not change the state. Suddenly when we get first A, we will change the state and go to Q1. Okay. Now the fun starts. Suppose after this you have B. Oh, that means you were in the search of AB. Now just see. After this A, where is the machine? Q1. Correct? It has left Q0 and reached Q1. After this A, machine is in Q1. Now we are having B. We'll say, oh yes, we got AB. Let's go to final state. Okay. So
Are you DFA? Are you working like DFA in your mind? You got first AB you got. You are immediately in the final state. And now I tell you, there are more characters. Wait, string is not over. Wait, there are more characters. What you will say? I don't care. As a person, think of as a person, you say, you told me to search AB, I got AB. Now, however long string you give, I don't care because I already know the answer. Answer is yes. So suppose the next letter is A. Where you should stay? Final state only. So you'll say, okay, after AB, if I get A, I don't care. Again A, I don't care. Keep me in the final state. If I get B, still in the final state. So this was the transition we got. Once we get AB, we are in the final state and we know that we have reached the final state. We have got one occurrence of AB. Now whatever comes next, who cares? So let there be arbitrary string of AB after this, will stay in the final state. Okay? You understand that this DFA is incomplete. Now I am talking about development of DFA. That can be thought by playing game with us only. Think of that we were questioned, we were given the string, and what would you do? When will you immediately say yes? I'm saying there is a string A B. Oh, A B, you got it. You say okay. Now you tell whatever you want. I am in the accept state, correct or not? I will not leave that state. But this DFA, you may say, okay, now I have done, that's it. But this DFA is incomplete. Now I will give you a rule about DFA. There are three states in this, Q0, Q1, Q2. And input is made up of how many types of symbols? Two symbols, A, B. Listen again, three states, Q0, Q1, Q2. Input is made up of how many symbols? Two symbols, A, B. Then the rule of DFA is that every state must have exactly two transitions, one for A, one for B. What is the rule I said? If Q0 is the state, and how many input symbols are there? Two, A and B. Then Q0 should have an arrow for A, Q0 should have an arrow for B. Look, Q2. Is Q2 having both arrows? Yes. Q2 is having arrow for A, arrow for B, and it stays in Q2. There is something missing here. Q1. Q1 knows what is to be done on B, but Q1 does not have transition for A. It does not have transition for A, you watch. Are you following what I am saying? So this DFA is incomplete. Q1 is fine, Q0 is fine, it is having AB transition. Q2 is fine, it is having AB transition. Q1 is not correct. You might say, what's so special about that? Let it be. We'll say Q1 doesn't care what happens for A. I'll show it. Now, just think of this string. We are giving a string like this, okay? B, B, A, 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 B, A. This is the string. Should this string be accepted? Yes, of course it should be accepted, correct? Because it contains AB, substring AB. We will go in a trap here. At most confusion we will have. Forget about that reaching final state. It will get into trap in between only. Let's see how. By the way, now you know the working. Q0, initial state, read B. No problem. Q0 says, I know what has to be done when I get B. Q0 says, I will stay in Q0 itself, correct? On this B, stay in Q0. On this A, okay, that also it knows. Q0 reading A, we are into Q1 state. Now we are in which state? Q1. Now Q1 is reading A. Just check my words. Q1 is reading A. Does DFA know where to go on reading A? Have you given the transition? No, we have not given the transition. That means this DFA will be a failure. It will get stuck there. It doesn't know what to decide. If your machine doesn't know what to decide, it will stop. Simply stop. This DFA is incomplete.
What is the rule? You repeat. What is the rule? For every symbol, there are two symbols, A, B. For every symbol, there should be a transition from every state. From every state. And one transition is missing for this. So when we reach this A, we were in Q1 and our machine doesn't know what to do when it is in Q1. Okay. By the way, I will disclose the answer. What is to be done if I get A again here? If I get A again here, I'll say I'll go back to Q0. Don't worry, you will get used to this. If you are not, if you get misplaced here, why we went back to Q0, don't worry, you will understand this. You are going back to Q0 on reading this second A. What is your idea of thinking about this? What are you searching? But which substring are you searching? AB, correct? You are searching AB. You got first B. You said, I didn't even get A. So let me be in Q0 only. You know that. Next B. You said, I am in the search of AB. I have not even got first A. Then I will remain in Q0. Then you got this A. You watch this one. First A. Oh, you said, I got A and I want AB. So greedily, you went to Q1. Okay. Now what are you expecting after A? Greedily, what are you expecting? B. So that you get AB, you discover AB. But after this A, where you are in Q1 now, you get A again. You say, I was in search of AB, but that AB got broken. I got AA, so I will have to restart my search. Aren't you understanding? I will have to restart it and I will have to see again a pattern where A is followed by B. So what you did is that you went back to Q0. Okay, now after reading this second A, you said, whatever I matched till now was a waste. I got A, I was waiting for B, but I got second A, so I will go back to Q0. Okay, you're back in Q0. Now, let's see this A. Next A. Where will you be taken? Q1. Because you were in Q0, no? So you are now in Q1. In Q1, you will be reading B and you got AB as a substring. So you will go to Q2. And once you are in Q2, you're done with the problem, you got the substring AB. So finally what I want to say is the art of designing DFA is the art of understanding what you will do while you are asked whether this string is valid or invalid. Okay, don't worry, we will be learning at least 10 such examples today. And mostly, you will be helping me to develop these DFAs. But now all the transitions are defined properly. Okay, let's go back to the previous page. This was the DFA which accepts all the strings which contain one occurrence of AB. Just check our answer is complete now. We have drawn the transition table also. Okay, so shall we go for the next problem? Any questions till now? Very good question. Here we go. The question which has arrived is, see, that's what I was saying. You may have a suspect here, okay? Now, the question which has arrived, is like this. Just check. I got this suggestion. Okay. Now you watch. I have got a suggestion that if Q1 gets A, instead of going back to Q0, why don't we stay in Q1 itself? Correct? I hope you are understanding what's the question. Previously, when Q1 received A, I went back to Q0 and said, let us trace AB again. Here, what we are saying is, if we are in Q1, why don't we stay in Q1 itself? Because we are thinking that I will get B. Very nice suggestion. You just watch. In this example, whether you go back to Q0 and then again search for AB, or you stay in this particular state itself, it doesn't matter in this problem. So both answers are correct. Let's prove.
Absolutely right you are. Even this, so all the people who are thinking, can this be the transition, why did sir go back over here, this is also valid. Okay, let's see what was our problem. We had b b a repeated a, correct, and then b, then ab. Okay, what we did last time, when we get a and again a, we went back here and we started searching, huh, for pattern ab, correct. Now here on the first b, where will you stay? Q0. Second b, Q0. This a, you are in Q1. So what you will say, okay, I have got a A. Now I am waiting for B, because after all pattern I want is AB. But oops, after this first A, you again get A. So what you will say, I have at least got A and I am in Q1 and Q1 is about A, reading A. So I will stay in Q1, I am waiting for B. And you get a B. As soon as you get a B, you know that you have got A followed by B. You got A followed by B. So this is also the correct answer. Very nice. So what if we got arbitrary input like this? You see, we got the input as B, B, A, B, A. Now this contains AB, you see. And you know how many times it will loop in Q1. Because once you get A, you know that we are into Q1. Then you are saying, if I get A again, I will wait for B. Because after all, I am looking for AB. So I'll wait. A, again A, again A, again A. Suddenly you get a B. That means you get AB as a substring in the string. Very good suggestion. So by the way, both the results are correct. Whether you go back to Q0 or stay in Q1. I think this is a better one. And it's logically very strong, you know, that I got A, so I am in Q1. Now I am waiting for B. Oh, I got A again. Why don't you stay in Q1? Wait for B, wait for B. Absolutely right. Okay. So this was the problem. At least one occurrence of AB. Now let's build our skill of constructing this DFA. Okay, let's see. Here we go. Next problem. You can take down this problem. The problem is DFA. We want to construct DFA. I'm not writing those words, construct a DFA. Okay. Imagine that the question is construct a DFA. DFA that accepts strings that end with A. End with A. So last letter should be A. DFA that accepts the strings that end with letter A. And now you see how the question will be given in the paper also. They will give this sentence and then they will write sigma is equal to A comma B. That's it. This is the question for 5 marks. Okay. Additionally, you won't be given any details. What you immediately understand, you know, that the paper setter is asking us to build a DFA. Of course, the input given to DFA is a string, always a string. And that string will be made up of AB, any combination of AB. But the output will be yes only if the last letter, if this is the string, the last letter is A, only then it should be accepted. Whereas if this is the string given, which is also a string of AB, this string ends with B, so it should be rejected. The output should be no. Such a DFA we want to construct. Okay? Input can be any combination of AB. And you know when the output should be yes. Last letter is A. Output should be yes. Let's play a game. Of course, we know Q0 will be the initial state. By the way, the names of the states, you know, can be anything. It's not necessary that names of the state must be Q0, Q1, Q2. Many people name the states as P, Q, R, S, T, like that also. But standards are that all authors have used these symbols, Q0, Q1, Q2. That's why we write like this. Okay. So let's play a game. I will give you a string which is made up of AB.
and you think as a DFA, you think start from Q0 and you think that whether you will accept it or reject it, what you will do. Okay, string must end with A. A. Now I have not said that the string is finished, but right now, which is the last letter you are reading? A at the moment. So DFA will say, wait, A. Maybe this is the last letter. So where you should immediately jump? Final state, correct? That means if Q0 reads A, machine should go to final state, correct? But I did not say this is the last letter. You as a DFA thought that this is the last letter and the string is ending with A. String is still continued, still going on. I give B. Oh, you say I am in the final state. I thought that A was the last letter. Oh, but wait, there is one more letter, B. Oh, that means the string is not ending with A. String must end with A. Only then you should accept it. So what you will do now? Think of transition. What? वापस Q0 में जाओ. Yes. अब Q1 में क्यों आए? ये सोच के कि लास्ट लेटर A था, लेकिन स्ट्रिंग में और एक लेटर है B. अब आप फाइनल स्टेट में तो नहीं रह सकते क्योंकि स्ट्रिंग तो B से एंड हो रहा है. तो आप क्या बोलो? मैं जाऊंगा वापस Q0 में. You go back to Q0. Now you think the game is still on. A. String is still going on. Now the last letter you read is A. That means the string ends with A. So you'll go back to Q1. Okay. A. Where will you be? Q1 mein hi. But you see, now you will say that Q1, you have a loop for A. Are you understanding? Tell me, why did you come to Q1? Because the latest letter you read was A. After that A, you have again A. So you'll say, why will I leave the final state? Because the string is still ending with A. Let me in accept state. Okay. Now, what if we are in Q1 now? Still the game is going on. We have a B. We were in Q1 because A was there. Last letter is A. Last letter is A. Suddenly the letter is B. So you will come back to Q0. Correct? Again, if I have A, oh, the string ends with A. I am into final state. Is something missing here? What's missing? Q0 का B. Very well said. Q0 का B. क्या रूल बताया था मैंने? Every state must have transition for every input symbol. तो ये DFA में गड़बड़ है. दिखता तो बराबर है अभी के लिए, हाँ, लेकिन आप सोचो, यहां देखो सब लोग, just check this. Suppose I give the string like this, B, B, A, A. String made up of A, B, yeah? And what should be DFA doing? Accepting this because it ends with A. Start at Q0 and we have a B. Oops, straight away DFA will give up. It says, oh, I don't know what is to be done on B. I don't know what is to be done on B. तो आप लोग मुझे बताओ, अब DFA बनाओ सब लोग मेरे साथ. हाँ, क्या एम क्या है आपका? If the string ends with A, you should be in the final state. पहला ही लेटर मैंने आप लोगों को ना B दिया है, तो आप क्या फाइनल स्टेट में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि स्ट्रिंग आप कहाँ एंड हो रहा है? B में एंड हो रहा है. तो बताओ क्या ट्रांजिशन आएगा? Q0 on B remains in Q0. I hope you are understanding. I am not going to final state because string doesn't end with A. Here again, I am in Q0. I am not going to final state because the string is ending with B right now. I am going to final state because the string is right now ending with A. And once you are in final state, you get A again. You will say, I will stay in the final state because string is still ending with A. And suddenly, if there is one more letter B, you will leave the final state. You will come back to Q0 and say that string is ending with B, so I won't be in the final state. This is the correct DFA. Correct?
Suppose you have, this is a 5 marks question and you are asked to construct a DFA. आपने कंस्ट्रक्ट तो कर दिया, हो गया, लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे 5 मार्क ऐसे थोड़ी देंगे। तो अब क्या बाकी क्या है, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये डायग्राम तो आप ड्रॉ कर लोगे, अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द डायग्राम, सेकंड स्टेप डिस्क्राइब इट। दिस डीएफए, देखो मेरे साथ, दिस डीएफए हैज Q इक्वल टू, बताओ पहले क्या आएगा, Q0 Q1। क्या क्या रहता है डीएफए में? सेट ऑफ स्टेट्स, विच स्टेट्स आर देयर, Q0 Q1, ये डिस्क्राइब करो। सिग्मा, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है, A, B। देन ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल में Q0 Q1 दो स्टेट्स आएंगे। अच्छा, Q0 इज द इनिशियल स्टेट, Q1 इज द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को ऐसे मार्क करो। अच्छा, कॉलम्स आएंगे A B, ट्रांजिशन डिफाइन करो। Q0 on reading A, Q0 on reading A, you are in Q1. Q0 on reading B, Q0 on reading B, you are in Q0. Q1 on reading A, Q1 on reading A, you are in Q1. And Q1 on reading B, Q1 on reading B, you are back to Q0. वो दोनों रोज सेम आ जाए, Q1 Q0 Q1 Q0, लेकिन it is a coincidence, लेकिन वो DFA देखो, for that DFA we have drawn the transition table. अच्छा, then who is the final state? Q1. So F is equal to Q1, ऐसे लिखना पड़ेगा। सेट नोटेशन में लिखना फाइनल स्टेट, हमेशा F ऐसे मत लिखना, F is equal to Q1, नहीं, वो एक सेट होगा, सेट के अंदर लिखना, ठीक है। और इनिशियल स्टेट कौन सा है? Q0। ये डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया सेकंड। एक तो आपने डायग्राम ड्रॉ किया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब आपको वर्किंग बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्किंग कैसे बताओगे? कोई एक या दो स्ट्रिंग लो और वर्किंग बताओ। चलो ड्रॉ करो मेरे साथ वर्किंग। अच्छा, ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं, द इनपुट इज, इनपुट इक्वल टू A B A। छोटा ही स्ट्रिंग लेना हमेशा, बिकॉज इफ यू टेक बिगर स्ट्रिंग वर्किंग स्टेप्स विल बी लॉन्गर, ठीक है। A B A, ये इनपुट है। अब देखो नोटेशन, जरा नोटेशन आएगा इसमें, हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखो डेल्टा A B A, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, इनपुट इज A B A, ऐसे लिखो, डेल्टा Q0 कॉमा A B A। बहुत इंटरेस्टिंग है ये नोटेशंस, देखो इनपुट क्या दिया है, व्हाट इज द इनपुट? A B A। हाउ डिड वी स्पीक व्हाइल स्पीकिंग? मशीन स्टार्ट्स इन Q0 and it is reading A. Input is complete string, but Q0 is reading A. Now, whenever any reader reads this notation, would understand delta is a transition function. And Q0 is reading this first letter A. Which state is reading the letter? Q0, because that's the initial state. Q0 is reading A, this first letter. So you underline this in your working like this. This is the current letter, okay. Now, Q0 reading A, you will be in Q1। ये यहां से भी देखो चाहिए तो, आपने ही इसको ड्रॉ किया है, या तो यहां से देखो, ये भी तो आपके पेपर पे ही है। कहीं से भी आप देखो कि Q0 जब A रीड करेगा तो कौन से स्टेट में जाएगा? Q1। तो अब देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, डेल्टा वी आर इन Q1, देखो Q0 से मशीन Q1 में आ गया। अच्छा, अब BA, ये A कहां गया? A प्रोसेस हो गया ना, हम लोग आगे बढ़े स्ट्रिंग में, तो अब वो लेटर बताओ ही मत, डोंट शो दैट लेटर हैज बीन प्रोसेस्ड। सो डेफिनेटली Q1 इज रीडिंग B, ठीक है। Q1 रीडिंग B, यू ऑब्जर्व वी आर इन Q0, या तो यहां से पढ़ो Q1 रीडिंग B, वी आर इन Q0, दैट मीन्स यू शो द वर्किंग एज वी आर बैक टू Q0 and we have the string left as A, this letter is read by Q0। Now Q0 is reading A, we are in Q1, ठीक है। So Q0
Oh, I'm so sorry. We are in Q1. By mistake, I wrote Q0. Q0 is reading A. We are in Q1. Q1. And there is nothing pending now in the string. The string is over. The string is over. When the string is finished, what do you check? In which state the machine is? Machine is in Q1 state, and that is a final state. If the machine is in the accepting state after the end of the string, then DFA will output yes. तो आपको ऐसा रीजन लिखना है आंसर पेपर में. कैसे रीजन? ये सब आपने बता दिया वर्किंग. नाउ यू विल हैव टू से द स्ट्रिंग is finished. Correct? DFA is now at this moment in Q1 state. The DFA is in which state? Q1 state. Q1 is final or accepting state. Accept state. Therefore, the string ABA is accepted. Accepted by DFA. मतलब आंसर यस है. DFA का आंसर यस है. राइट है? तो why I told you that you take a smaller string, because then these steps will increase unnecessarily. After all, some input string you take and you explain using delta. यही notation आपको बताना है. Because these notations help in minimum way, you can explain maximum things by drawing this notation. ठीक है? Okay. Let's take some other example now. So this question I declare it is solved. Okay. Now here we go. Question is DFA that accepts the strings that end with AB. Last two letters must be A followed by B, and sigma is A comma B. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका मतलब है इनपुट है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए बी का. तो वी वांट टू बिल्ड अ डीएफए that will take input made up of AB. When should be the output? Yes, if the last two letters are AB. Suppose I give this A, B. Now you see the last two letters are AB. What if the string was like this? Now the last two letters are BA, then output should be no, because this string does not end with AB. The last two letters should be AB. Correct? Okay. Now I will not play a game now. Our first method was treating ourselves as DFA and then thinking. Now I will give you another methodology to think, cultivate that habit, think how to develop a DFA. Okay? And this is not any game, no jokes. This is technical way of building a DFA. Okay. We want to accept the strings that end with AB, correct? So let's start with Q0 state. And the first question you put to yourself, कि ऐसा कौन सा स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी यूज करके जो हम स्ट्रिंग बनाने वाले हैं. इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, ए बी फॉर्म करके, ए बी यूज करके कोई भी इनपुट हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्ट्रिंग है जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है और जो एक्सेप्ट होगा? ए बी. करेक्ट, यू सेड इट. बताओ, मैं ऐसा इनपुट दूंगा ए बी, ये स्ट्रिंग है. क्या ये स्ट्रिंग ए बी से एंड होता है? बिल्कुल होता है. यहां से शुरुआत करो. अच्छा, आप बोलोगे सर इससे भी तो छोटा स्ट्रिंग है ना. आप बोल रहे हो छोटे से छोटा कौन सा स्ट्रिंग होगा? अगर मैंने ऐसा स्ट्रिंग दिया ए, ये भी इनपुट दे सकते हैं हम, हाँ, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं होगा. मैं क्या बोल रहा हूं, थिंक ऑफ द स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड
and also the smallest among all the accepted strings. तो मिनिमम आप क्या सोचोगे कि कम से कम ए बी तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, तो ये सबसे छोटा स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होगा, इसके लिए आप डीएफए ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है? डीएफए ड्रॉ पूरा नहीं होगा डीएफए, लेकिन what now judge yourself, what will you say? You are in Q0, I say A। अच्छा, स्ट्रिंग कहां पे एंड होना चाहिए? ए बी से एंड होना चाहिए। ए, तो ए तो मिला ना, तो यू विल चेंज द स्टेट। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी ए बोला है, उसके बाद मैं बी बोलता हूं, ए बी, तो आप बोलोगे अच्छा दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज करंटली एंडिंग इन ए बी, और यहीं पे मैं रुक गया, ए बी बस। then you will say my DFA is over. First A takes me to Q1, then A followed by B takes me to Q2, and after that the string is finished. तो बताओ ये मिनिमम DFA है कि नहीं? राइट, यहां से आप शुरुआत करो, ठीक है। अब ये DFA इनकम्प्लीट है, बताओ क्यों? क्या रूल था? फॉर एवरी स्टेट देयर शुड बी 2 ट्रांजिशंस इन दिस एग्जांपल बिकॉज देयर आर 2 इनपुट सिंबल्स। तो हर एक स्टेट से ए और बी दोनों का ट्रांजिशन होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंस क्रिएट होगा ना कि बी पे क्या होगा, ए पे क्या होगा। देखो Q0 को पता ही नहीं है कि अगर बी रीड हुआ तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अब है ना, ये आपने पहले ये काम किया, सबसे छोटा स्ट्रिंग लिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो, कहां कहां ट्रांजिशन मिसिंग है वो फिल इन द ब्लैंक्स करो, और वो अपने आप आ जाएगा। आपको बेट लगाता हूं मैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, अभी आप सोचने लग गए हो। चलो फिर हम लोग गेम खेलते हैं। अब गेम पे आते हैं। स्ट्रिंग मस्ट एंड विद ए बी। मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूं, हाँ, Q0 से स्टार्ट करो, पहला लेटर है बी, स्ट्रिंग किससे एंड होना चाहिए? ए बी, ए बी से एंड होना चाहिए। मैंने बी दिया है, आप बोलोगे मैं तो ए बी सर्च कर रहा हूं, अभी एंड में होना चाहिए, शुरू में ही बी है, तो मैं कहां कहां जाऊं? उधर ही रहता हूं Q0 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई विल नॉट मूव बी। तुरंत आप समझ जाओगे Q0 का किस्सा एंड। हाँ, अब Q0 को पता है ए पे क्या करना है, बी पे क्या करना है। देखो कैसे डीएफए डेवलप हो रहा है। अच्छा, अब सडनली बी के बाद आपको ए मिला। अच्छा, पहला बी हो गया, अब ए आया, तो आप Q1 पे आ गए, यू आर इन Q1। Now you know you are thinking, okay, now there might be a B. After this A, there might be a B, and there itself the string will be over. You might think like that. Remember the string should end with AB. इसके बाद फिर से A आया. After A, I get A again. What are you searching? Come on, what are you searching? AB. That too at the end. Huh? A के बाद A आया, आप ही बताओ क्या करोगे? उधर ही रहो ना, बिकॉज यू आर सर्चिंग ए बी। अच्छा, ए के बाद अगर ए है, फिर से ए है, फिर से ए है, और फिर बी है, दैट यू गॉट ए बी। चलो ए, फिर से ए आया बी, हाँ। नाउ आफ्टर दिस यू विल मूव टू Q2। कॉन्ग्रेचुलेशंस Q1, बोथ द ट्रांजिशंस आर ओवर। अब Q2 पे आना। बहुत लोग Q2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं उसको छोड़ना मत ऐसे। अच्छा, ये बी है, ठीक है। अब स्ट्रिंग अभी भी एंड नहीं हुआ, इसके बाद ये है। ओह गुड लॉर्ड, मतलब स्ट्रिंग ए बी से एंड नहीं हो रहा है। ए बी के बाद ए है, ए बी के बाद फिर से ए है, लेकिन इस ए के बाद बी हो सकता है ना, करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंटली ए बी, इसीलिए हम लोग खुशी खुशी Q2 में आ गए। अरे ऐसा लग रहा है कि ए बी से एंड हो रहा है स्ट्रिंग, लेकिन उस ए बी के बाद फिर से ए है। तो आप सोच सकते हो, सोचो कहां पे जाओगे आप, कौन से स्टेट में जाओगे? Q, उधर ही जाएंगे Q2 पे। अच्छा रुको, हाँ Q1 में जाएंगे, करेक्ट। हाँ, अगर हम लोग ऑन रीडिंग ए यहीं पे रहे सपोज, अब देखो क्या होगा। यहां तक तो आ गए ना हम लोग, ए बी, वी आर इन Q2। आफ्टर ए बी वी आर रीडिंग ए। फिर if you give such a transition, then you will stay in Q2. And suppose this is your string, input string, then the machine will land in Q2, final state.
but machine should not be in the final state because the string is not ending with AB. Are you following? You should leave the final state. You should say, no, no, I was expecting that the string ends with AB, but after this AB I have got a A. That means I should leave the final state. And the best state, I hope now you're understanding, should be Q1, because after this A you're in Q1, and suppose we have a B again, then you will be going back to Q2. Okay. Slowly and steadily, we are building that logic. We are trying to understand the transitions, correct? हाँ, फिर बताओ मुझको, हम लोग कहाँ थे? या ए बी. अच्छा बताओ, ए बी, वी आर अगेन इन Q2. Suppose we get B here. अब this is very interesting. What if you get B? हमको तो चाहिए था लास्ट 2 लेटर्स ए बी होने चाहिए, और हमको मिले भी, ए बी मिला, इसीलिए हम लोग Q2 में हैं. लेकिन अब बी मिल गया. अब ना मैं क्या बोलूँगा, अब तो मैंने जो भी काम किया है अब तक वेस्ट हो गया, क्योंकि ए बी तो मिला था, लेकिन अब मुझे बी मिला. अच्छा, लास्ट 2 लेटर्स क्या होने चाहिए? ए बी. इसका मतलब है मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए सर्च, एंड आई शुड गो बैक टू Q0. फिर से मुझे कंपलसरी ए चाहिए और फिर बी चाहिए. ठीक है ना? अच्छा, दैट मीन्स इन Q2 स्टेट इफ यू गेट बी, आई शुड गो बैक टू Q0. अच्छा, सोचो, इसके बाद अगर ए है तो फिर से आप Q1 में जाओगे. सपोज आप और एक ए है, Q1 में ही रहोगे. फिर से ए है, Q1 में ही रहोगे, और बी आया और सच में यहां पे स्ट्रिंग एंड हो रहा है, हाँ, तो आप Q2 में रहोगे. कंटिन्यू. ये ए बी रीड करने के बाद हम Q2 में, सडनली बी आया फिर से, तो आप Q0 में आ गए. फिर से बी है, Q0, अब ए बी है. देन एंड इफ दिस इज द लास्ट 2 लेटर्स, you are in Q2. Isn't it so? So we have constructed the DFA which contains all the transitions for all the states. शुरुआत कहां से किया, याद है आपको? नहीं, ये डेवलप करने के लिए शुरुआत कहां से, क्या सोचा हमने? सबसे छोटा स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होता है, ये आप सोच के अगर करोगे, और वो छोटे स्ट्रिंग के लिए आपने डीएफए ड्रॉ किया ना, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी. इनफैक्ट आप फाइनल आंसर तक पहुंच ही जाओगे. अच्छा, ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि some people may feel that Q2 on reading B, why are we going to Q0? Anyway, we are waiting for AB. तो यहाँ भी तो A है, यहाँ भी A है, तो यहाँ यहीं पे चले जाते हैं Q1 में. अगर A आया तो यह लूप होगा. मान लो मैंने वो किया, ये ट्रांजिशन, पता है कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, ये B यहाँ पे आया, क्योंकि अगर B आया तो फिर से मुझे A भी चाहिए ना, तो ये A तो है ट्रांजिशन, फिर B है. आपको समझ रहा है, ये जो A है ना, ये कंपलसरी A नहीं है. मैं बोल रहा हूं A होगा तो Q1 में रहो, नहीं होगा तो Q2 में जाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूं ना. देखो, अब अगर स्ट्रिंग ऐसा है, वेरी इंटरेस्टिंगली, A B B B, ये स्ट्रिंग मैंने दिया, ये एक्सेप्ट होना चाहिए. A ट्रिपल B नहीं होना चाहिए. स्ट्रिंग शुड एंड विद ए बी, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा. ओ हेलो, ये एक्सेप्ट होगा. गलत हो गया ना डीएफए. देखो कैसे, ऑन रीडिंग फर्स्ट ए वी आर इन Q1. ये ए रीड करने के बाद Q1 में है, ये बी रीड करने के बाद, ओ गुड, वी हैव ए बी, तो हम लोग चले गए Q2 में. और इसके बाद फिर से बी है, तो जब ये सेकेंड बी आएगा ना, तो वी आर बैक इन Q1. जो गलत है, ये गलत है डीएफए, वी आर बैक इन Q1. अच्छा, हम लोग अभी Q1 में है, नेक्स्ट बी वी विल बी इन Q2, और स्ट्रिंग तो एंड हो गया. स्ट्रिंग एंड होने के बाद अगर मशीन फाइनल स्टेट में है तो मशीन यस बोल रहा है, जो गलत है. गलती क्या हुआ मालूम है? ये ए बी के बाद जब मुझे बी मिला, तो ये कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया ना. मैं सर्च कर रहा हूं ए बी,
ए बी के बाद बी मिला, तो इसका मतलब है मुझे बोलना चाहिए आई शुड नाउ अगेन सर्च फॉर कंपल्सरी ए फॉलोड बाय कंपल्सरी बी. कंपल्सरी ए यहां है, कंपल्सरी बी यहां है, ए बी. तो आई शुड गो बैक टू Q0. Oh, I'm so sorry. I should go back to Q0 on reading B. ये मशीन होगा. अच्छा, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपने ड्रॉ कर लिया. इसके बाद आप क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे. डिस्क्रिप्शन कैसे होगा? लिखो. यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ. M is Q सिग्मा डेल्टा Q0 F. अच्छा, what is Q? Q0, Q1, Q2. 3 states are there. सिग्मा वो तो क्वेश्चन में दिया है, इनपुट सिंबल्स ए बी. डेल्टा आपको ये ड्रॉ करना है पेपर में. डेल्टा विल बी अ मैट्रिक्स विद कॉलम्स एज ए बी एंड रोज एज Q0, Q1, Q2. Q2 इज द फाइनल स्टेट, इसको स्टार मार्क करो. Q1 इज द इनिशियल स्टेट, एरो मार्क करो. Q0 on A is Q1, I think. Q0 on B is Q0. Q1 on A is Q1 itself, and Q1 on B is Q2. Q2 on A is back to Q1, but Q2 on B is back to Q0. ये आपको ड्रॉ करना है. और F फाइनल स्टेट Q2 है, इसको सेट नोटेशन में ड्रॉ करो. और इनिशियल स्टेट तो आपने लिखा ही है Q0. उसके बाद आप वर्किंग बताओ. वर्किंग कोई एक स्ट्रिंग ले लो इनपुट. सपोज आपने इनपुट लिया ए ए बी ए बी, ये इनपुट लिया है. नाउ दिस स्ट्रिंग एंड्स विद ए बी. अच्छा, कैसे स्टार्ट होगा बताओ? मशीन स्टार्ट्स इन Q0, द स्ट्रिंग इज ए बी बी. इसको अंडरलाइन करो. Q0 इज रीडिंग ए. दैट मीन्स द मशीन विल एंटर Q1 स्टेट. यहां से चेक करो या तो यहां से चेक करो. ओके, Q1 स्टेट में है और नाउ द स्ट्रिंग ए बी बचा है. ये ए तो हो गया. Q1 में जब आप ए रीड करते हो तो Q1 में ही रहते हो. सो डेल्टा Q1 कॉमा बी. नाउ Q1 इज रीडिंग बी, दैट मीन्स यू विल बी इन Q2 स्टेट. अब ए बी बच गए. Q2 is reading A, so you are going back to Q1, and only B is pending. Now Q1 is reading B, so you will be in Q2 and the string is over. तो आपको लिखना है we have reached final. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ या तो आप अपने से लिखो. Machine has reached final state and string is over. Hence the string is accepted. String is accepted. ये इतना आपने किया तो ही आपको 5 out of 5 मिलेगा. ठीक है. थिंकिंग प्रोसेस कोई आंसर पेपर पे नहीं लिख सकता है कि मैं यहां से यहां क्यों जंप कर रहा हूं. ये सब हम नहीं लिख सकते कि मैंने क्या सोचा और ये डीएफए कहां से आया. जैसे हम प्रोग्राम हमको पूछते हैं सी प्रोग्राम, तो हम अपना थिंकिंग थोड़ी लिखते हैं, मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये फॉर लूप कहां से आया. ओके, बट बाय द वे लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो. Question is, develop a DFA that has at least one occurrence of substring. This is substring. Sorry for my handwriting. One occurrence of substring ABA, and in the question it is given sigma is AB. That means input given to the DFA can be any string made up of AB, and if that string contains at least one occurrence of ABA, then only you should accept. तो इधर मान लो कि मैंने ये Q0 स्टेट बनाया और मैंने ऐसा स्ट्रिंग दिया, देखो A B B B B B B A. ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी ऑकरेंस ए बी ए का नहीं है. ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय ए नहीं है, तो ये रिजेक्ट होना चाहिए. लेकिन अब कहीं तो ऐसा स्ट्रिंग है ए बी ए. देखो यहाँ पे
ए बी ए है स्ट्रिंग में, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, ये ए बी ए कहीं कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो नहीं बोला है ना कि इट शुड एंड विद ए बी ए। क्वेश्चन क्या है, इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी ए डी एफ ए शुड एक्सेप्ट इट। तो ऐसा हो सकता है ए बी बी, ए बी ए, बी बी बी, तो ये भी है ना, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी ए इज देयर मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट वन ऑकरेंस बोला है, तो हो सकता है ऐसा है ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी। नाउ इवन दिस कंटेन्स द सबस्ट्रिंग ए बी ए, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, डेवलप, चलो देखते हैं कैसे होगा ये डेवलप। पहला क्या सोचोगे? वेरी गुड, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी यूज करके, ए बी जो एक्सेप्ट होगा कौन सा होगा? ए बी ए। उससे छोटा स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा स्ट्रिंग देगा ए बी, ये भी स्ट्रिंग है बराबर है, लेकिन ये रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इस स्ट्रिंग में ए बी ए नहीं है ना। सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी ए ही होगा, करेक्ट? सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी ए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आपको मिल रहा है डी एफ ए, क्या बोलोगे आप? Q01 reading A, I will change the state, go to Q1. Then in Q1 reading B, I will go to next state, Q2. On reading A, I will go to next state, Q3. So, can you describe Q3 state? चलो अब है ना, हम लोग और एक काम करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो है ना हम लोग स्टेट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। मान लो अभी डीएफए Q3 में है, इस स्टेट में है, करेक्ट? सोचो जरा, अभी है ना डीएफए Q3 में है, Q0 से स्टार्ट हुआ, Q3 तक आ गया, तो आप Q3 को डिस्क्राइब कैसे करोगे? क्यों है हम लोग Q3 स्टेट में? क्योंकि लास्ट 3 लेटर्स जो हमने पढ़े ना अब तक, वो क्या थे? ए बी ए। ये जब सीक्वेंस मिलेगा ए के बाद बी, उसके बाद ए, तो ही हम Q3 में आएंगे। मतलब Q3 कितने सिंबल याद रख रहा है? इनडायरेक्टली Q3 3 सिंबल याद रख रहा है। Q3 बता रहा है कि मैं Q3 में हूं, अभी मशीन Q3 में है, क्योंकि लास्ट 3 सिंबल्स वेर ए बी ए, करेक्ट? अच्छा, लेकिन ये डीएफए इनकम्प्लीट है। अब अपना गेम शुरू होता है, ठीक है ना? व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर? पैटर्न ए बी ए। थिंक Q0 knows what is to be done on A, B सस्पेंस है ना। तो आप सोचो जरा, अगर कोई बोला सर्च करो ए बी ए और फर्स्ट लेटर बी है, फिर से बी है, फिर से बी है, आपको समझ रहे हैं आप Q0 में ही रहोगे, है ना? हो गया ना, बिल्ड हो गया ना, डीएफए कंप्लीट कर दिया, ठीक है? हाँ, तो Q0 says that I am searching ABA. Hello, I have not even got A, so I will not leave anywhere. I will stay in Q0. अच्छा, Q0 now knows BA, both हो गया। Q1 suddenly there is A, so B B B B B A। हाँ, हम लोग Q1 में है, हम लोग सर्च कर रहे हैं ABA। अब मान लो ये A के बाद फिर से A है, तो क्या होगा? हम लोगों को तो ABA चाहिए ना, इसके बाद B होगा, उसके बाद A होगा, फिर से A है, फिर से A है, तो आप लोग समझ रहे हो, मैं यहाँ लूप बना दूंगा, क्योंकि मैं बी ए के लिए रुका हूँ, ए तो है मेरे पास, ए बी ए, करेक्ट? देखो Q1 के भी दोनों ट्रांजिशन हो गए। अच्छा, अब मान लो इसके बाद बी आया, अब हम लोग कहाँ हैं? Q2 में है, Q ए बी, हम लोग यहाँ पहुंच गए Q2 में। तो ए बी, सडनली वी आर हैप्पी, अच्छा हम लोग तो ए बी ए सर्च कर रहे हैं, इसके बाद ए हो सकता है शायद, लेकिन बी आया, उप्स, अरे हम लोग ए बी ए सर्च कर रहे थे, ए बी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब सडनली बी आया, तो आपको नहीं लगता है मुझे सर्च फिर से शुरू करना चाहिए? आप समझ रहे हो, अब तक की जो मेहनत थी ना, बेकार हो गई। वट एवर हार्ड वर्क वी डिड while searching, not while developing, while searching has gone a waste. I got A, I got B, after that I was expecting A, but I got B.
So I should go back to that state where there is compulsory A followed by B followed by A. इसका मतलब है आप समझ रहे हो कि Q2 स्टेट से ना, जहां पे हमको A B या तो A B B मिला है, A B B, I should say go back here, go back and wait till you get A B A. समझ में आया? फिर से लास्ट एक्सरसाइज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहां से अगर मैं बी के लिए यहां जंप करता तो ये तो ऑप्शनल है ना, ये कंपलसरी ये नहीं है. करेक्ट? हाँ. तो देखो Q2 के लिए भी ट्रांजिशन हो गए. Q2 अब ये जानता है A पे क्या करना है और B पे क्या करना है. अब हम लोग Q3 में आ गए. नाउ दिस इज योर बिग टेस्ट. जस्ट चेक. सपोज ये स्ट्रिंग चल रहा है. अब ये B के लिए हम लोग यहां आ गए Q0 में. सब मेहनत बेकार हो गया. अब A मिला, ठीक है. फिर से A मिला, ओके, वी आर इनटू Q1. फिर से A मिला, Q1. अब B मिला, ठीक है, वी आर इन Q2. A मिला, वी आर इन Q3. अब मुझे बताओ, एक बार आपको पता चल गया कि A B A मिल गया है और आप Q3 में पहुंच गए, आपको क्या चाहिए? वन ऑकरेंस ना. अब इसके बाद कुछ भी होगा, A और B कॉम्बिनेशन, क्या फर्क पड़ता है? पिछले एग्जाम्पल में वैसा नहीं था. In the last example, we needed that the string should end with AB. End with AB ना, इसीलिए एक बार AB मिलने के बाद हम लोग ऐसा नहीं बोला आप कुछ भी होगा, who cares. हम लोग ने यहाँ लूप नहीं किया. हम लोग ने बोला कि AB लास्ट 2 लेटर्स होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि एक बार AB A मिल गया तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाओ. अब बताओ इसके बाद अगर B होगा तो क्या हुआ? AB A तो मिल गया ना, वी आर इन द फाइनल स्टेट. सो वी विल से on B or on A. Don't leave final state because we have got one combination of A B A. और Q3 को भी अब पता चल गया A B पे क्या करना है. That's it. That is our machine, and I'm sure that everybody got this machine in the first attempt itself, है ना? Yes. Okay. और क्या करना चाहिए हमको? डिस्क्रिप्शन और वर्किंग वो मैं आप पे अभी छोड़ता हूँ. आप मशीन M लिखो, Q क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है, और एक कोई स्ट्रिंग लेना और वो स्टेप्स बताना. ठीक है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ? लेट्स सी. Let's say we want a DFA that accepts all strings that end with A, B, A, and sigma is A comma B. Correct? This is the question. So, sigma is AB means the input can be made up of any combination of AB. Now, the first thing is all strings that have last 4 letters A, B, A, A. Then think of the smallest string that should be accepted. अगर ऐसा string दिया तो ये A, B, A, A से end हो रहा है ना, तो इसके लिए DFA ड्रॉ करो. फर्स्ट लेटर के लिए एक स्टेट बनाओ Q1, फिर A, B, A, A, Q4 is the final state. A, B, A, A. ठीक है? Now, what should be the transition for B? हम लोगों को चाहिए कि स्ट्रिंग A, B, A, A से एंड होना चाहिए. मान लो इसके पहले आर्बिट्री नंबर ऑफ बीज है. मुझे तो अभी तक A भी नहीं मिला, तो मैं कहाँ जाऊं? मैं इधर ही रहता हूं. आई विल वेट फॉर A, B, A, A. तो ये लूप हो गया. अच्छा, अब सोचो मुझे ये A मिला है, ये A, तो मैं Q1 में चला गया. इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था B, क्योंकि मैं A, B, A, A सर्च कर रहा हूं ना. आफ्टर द फर्स्ट A आई वॉज एक्सपेक्टिंग B. लेकिन इस B के पहले अगर मुझे A मिल गया, instead of A, B, A, A, after this A where I am in Q1, इस Q1 में मुझे फिर से A मिला, तो क्या हुआ? मुझे A, B, A, A चाहिए ना, फिर से A मिला, फिर से A मिला. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग योर लूप हियर? तो अभी भी मैं A के बाद B के लिए रुका हूं, है ना.
मान लो इसके बाद बी है, हाँ, तो आई विल बी इन Q2 स्टेट. आई एम इन सर्च ऑफ ए बी ए, करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे बी के साथ मैं Q2 में आ गया. ठीक है. अब इसके बाद है ना, रिमेंबर आई वांट ए बी ए, इस पैटर्न को मैं सर्च कर रहा हूँ. यहां तक तो ए बी तो मिल गया, मैं Q2 में हूं. सडनली मुझे बी मिला. ए मिलता तो मैं यहां चला जाता ना, कि वो तो मैंने पहले ही छोटे स्ट्रिंग के लिए ड्रॉ करके रखा है. लेकिन Q2 में जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ए बी के बाद ए होगा, मुझे बी मिला है. मेरी मेहनत बेकार हो गई. अब ए बी के बाद मुझे चाहिए था ए होना चाहिए, लेकिन ए बी के बाद बी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उस स्टेट में जहां से कंपलसरी सर्च फिर से स्टार्ट होता है. दैट मीन्स फ्रॉम Q2 आई विल से नो आई गॉट ए बी बी, आई वॉज सर्चिंग ए बी ए, तो फिर से जाओ Q0 में ऑन रीडिंग बी एंड वेट फॉर दिस पैटर्न ए बी ए टू ऑकर. समझ में आया? तो इस बी के साथ हम लोग फिर से Q0 में आ गए. अच्छा, अब बताओ, अगर ऐसा होगा ए फिर से आया तो हम लोग Q1 में है, करेक्ट. फिर ए बी आया तो Q2 में है Q1 से. फिर Q2 में ए आया, हाँ, Q2 goes to Q3. अच्छा, ए बी ए, लुक वी आर सर्चिंग फॉर ए बी ए बी ए, वाओ, आई थिंक वी आर नाउ गोइंग टू गेट ए बी ए. लेकिन इसके बाद मुझे बी मिल गया. उप्स, यहां पे गड़बड़ हो गया. ए बी ए तो मिला, उसके बाद ए मिलना चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग में बी है, करेक्ट है. नाउ हियर गोज योर टेस्ट. देखो, ए बी ए तक तो पैटर्न मैच हुआ, उसके बाद ए होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग में बी है. तो यहां Q3 में what do you think is the best state where you can go to restart the search? इधर देखो, रीस्टार्ट करना है ना. अच्छा, ए बी ए मिला था, ए बी ए, इसीलिए हम लोग ए बी ए यहां तक पहुंचे. उस ए बी ए के बाद बी मिला. मुझे बताओ, अपना सर्च यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता है ना फिर से. इसका मतलब है मैं Q3 से डायरेक्टली इनिशियल स्टेट पे नहीं जाऊंगा, मैं Q3 से उस स्टेट में जाऊंगा जहां पे ए के बाद मुझे बी होगा, फिर से ए. देखो, ए बी ए है ना, यहां पे मैं जाऊंगा, नॉट टू द इनिशियल स्टेट. अच्छा, तो अब मैं कहा हूं, देखो ये बी रीड हुआ, ये बी रीड होने के बाद मैं हूं Q1 में. सॉरी, ये ए रीड हुआ, आई एम सो सॉरी, ये ए रीड हुआ. नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, बी. आई एम सो सॉरी. हाँ, बी. ए के लिए तो ट्रांजिशन था, ये बी के लिए. हाँ, तो ये बी रीड करने के बाद मैं Q1 में हूं, करेक्ट. इसका मतलब है, अब मुझे बताओ, अगर ए होगा, ये बी के बाद, ये वाला बी जो है, ये मुझे यहां लेके आया. ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, नहीं, सॉरी, Q0 पे ही जाएगा. आई गॉट लॉस्ट हियर, आई थिंक सो. एक मिनट. बी ए बी ए, हाँ, ये Q2 पे आना चाहिए था. आई एम सो सॉरी. Q2 पे आएगा तो भी चलेगा ना पारस? देखो, सोचो पारस, ये यहां आना चाहिए था, बी ट्रांजिशन, है ना. क्योंकि मुझे अभी तक क्या मिला था मालूम है. लेट्स रीस्टार्ट दिस. वैसे एक ही ट्रांजिशन बचा है. हाँ, वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया. हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, सपोज है ऐसा है बी बी, तो मैं Q0 में ही रहूंगा, करेक्ट. फिर ए है, यहाँ आ गया Q1, फिर से ए है Q1 में ही. ये तो ट्रांजिशन हमको समझ में आ गए. ओके, फिर बी है. ओके, आई हैव रीच्ड हियर बी. मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, ए बी ए, और वो भी एंड में होना चाहिए, है ना, एंड में होना चाहिए. अच्छा, ए और बी मिला, ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स मिल गए, ए बी. उसके बाद मैं बोल रहा था ए भी मिला, इसके बाद ए बी ए, ये ए भी मिला है. अब इस ए बी ए के बाद मुझे ए एक्सपेक्टेड था, लेकिन बी मिला है. ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी ए के बाद
मुझे बी मिल रहा है तो मैं इस स्टेट में जा सकता हूं। इस स्टेट में अगर मैं गया और इसके बाद फिर से ए आया, हाँ, तो ए बी ए पैटर्न बन रहा है, करेक्ट। दिस वाज द स्टेट वेयर आई शुड रीच, ओके, करेक्ट। यू नोट द पैटर्न, ए बी ए, करेक्ट। अच्छा, मान लो सच में स्ट्रिंग यहां एंड हो रहा है, तो फाइनल स्टेट में रहेगा मशीन ए बी ए के बाद। लेकिन अभी भी ये डीएफए में कुछ बाकी है ना, क्या है, Q4 के लिए ट्रांजिशन ही नहीं है। तो आप लोग अब सोचो, ये मेरा क्वेश्चन है, मेनी ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ड्राइंग द फाइनल मॉडल। आप लोग सोचो ए बी ए के बाद हम लोग Q4 स्टेट में हैं। अब अगर इस Q4 स्टेट में फिर से ए आ गया, तब तो ए बी ए से एंड नहीं हो रहा है स्ट्रिंग, तब तो बी ए से एंड हो रहा है। तो व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड द मॉडल गो? मेरा क्वेश्चन है Q4 में मैं क्या रीड करके आया, ए बी ए रीड करके आया, करेक्ट। अब ए बी ए के बाद मुझे फिर से ए मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए ना, सर्चिंग। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट स्टेट वेयर आई कैन गो? बेस्ट स्टेट वेयर आई कैन रीस्टार्ट द सर्च ऑफ ए बी ए, Q4 Q1, यू सेड इट, करेक्ट। Q4 से अगर ए मिला तो मैं Q1 में जाऊंगा और बोलूंगा वैसे भी मुझे ए मिला है, ए के बाद अगर बी होगा और ए होगा तो ये स्ट्रिंग ए बी ए से एंड होता है, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इफ आफ्टर ए बी ए आई गेट अ बी? मैं ए बी ए सर्च कर रहा था, ए बी ए सर्च करते करते मैं Q4 में आ गया, और Q4 में अब बी है, टर्मिनेटिंग लेटर। तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर से सर्च शुरू करना चाहिए। तो कहाँ से सर्च शुरू करूं मैं, ए बी ए सर्च करना है। देखो लास्ट टू लेटर, अभी ये जो बी है इसके पहले ए था, मतलब इसीलिए तो मैं Q4 में आया ना, ए बी ए रीड करने के बाद ये ए के बाद बी है, तो मैं ऐसे स्टेट में जाऊंगा जहां पे ए है बाद में। तो व्हाट विल बी द बेस्ट स्टेट टू गो इज Q2, यू सेड इट, यू शुड बी इन Q2, ए बी होगा। Now this machine will halt in the final state only if the last four letters are A, B, A. Correct? अब आप देखो, अब हो सकता है ना, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ पे ना मेरा एक एम था टू टेक दिस कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। आप एक एक्सरसाइज करो अब मेरे साथ, छोटा सा एक्सरसाइज। Q4 पे पॉइंटर रखो अपना Q4, और आप बोलो ऐसे कितने तरीके हैं जिससे आप Q4 तक पहुंच सकते हो। आप है ना जरा डायरेक्शन सोचो, ऐसे कौन से वेज है जिससे आप Q4 में पहुंच सकते हो, सोचो जरा। हाँ, एक मेथड तो है Q0 टू Q1, Q1 टू Q2, Q2 टू Q3, Q3 टू Q4, क्लियरली लिखा है। और ये पाथ हमको क्या देता है, ए बी ए, करेक्ट। ऐसे हम Q4 तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप सोचो, ऐसे भी पहुंच सकते हो। सपोज आप Q4 पे हो, ऑलरेडी हो, तो Q4 से ही Q4 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, अब सोचो जरा। हो सकता है Q4 से आप Q2 में हो, Q4 Q2 Q3 Q4, है कि नहीं, Q4 Q2 Q3 Q4। अब आप बोलो आप क्या रीड कर रहे हो आप पे, Q4 से आप Q2 में गए, करेक्ट है ना, Q2 से Q3, Q3 से Q4, करेक्ट है ना, यस। हाँ, तो B, लास्ट 3 लेटर्स यू रेड इज B A A, लेकिन इससे पहले आप Q4 में आते वक्त A रीड कर चुके थे, करेक्ट और नॉट। आप समझ रहे हो कि मशीन Q4 में कब पहुंचेगा, जब लास्ट 4 लेटर्स होंगे A B A। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, 4 लेटर्स एंडिंग, ये अब तक तो नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, इतना बड़ा DFA अब तक तो नहीं आया, लेकिन पॉजिटिविटी ये आपको लाना है कि
ऐसे अगर मशीन होंगे तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा, और आप स्टेट्स फिल करते रहोगे, करेक्ट और नॉट। तो अब इसके बाद क्या बाकी है, मशीन डेफिनेशन और वर्किंग, ये आप फिल करोगे अपने आप। अच्छा, और कौन सा तरीका है Q4 तक पहुंचने का? इफ यू आर इन Q4, हाउ विल यू रीच Q4? यू मे गो फ्रॉम Q4 टू Q1, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4 फिर से। और आप लेटर्स पढ़ो, अब यहां से आप A B A A, you are reaching Q4 only on reading A B A, correct? Okay. Now I will introduce one term before we wind up this class. The term is about language accepted by DFA. You know what is DFA? Deterministic Finite Automata. अब ये language क्या होता है? See, let's write the definition like this. Let M be a DFA, defined for sigma is equal to A comma B. तो आप सोच रहे हो कोई एक मशीन है M, और इसको हम इनपुट देने वाला है स्ट्रिंग मेड अप ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी लिखा है, M इज द मशीन। देन लैंग्वेज, ये हम डिफाइन कर रहे हैं लैंग्वेज L, इसको एक नाम दे देते हैं L, लैंग्वेज L accepted by DFA is set of all strings that are accepted by DFA. इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। We will draw some examples. और लैंग्वेज, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब आप समझो मेरे साथ। जनरली लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है इन आवर रियल वर्ल्ड? लैंग्वेज मीन्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल से इंग्लिश लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ये जो M है ना, ये DFA M, ये अच्छा आपने ड्रॉ किया क्या? रुको जरा मैं दूसरे टाइप से एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये DFA है, Q0 A, Q1 B, ये DFA भी है। अच्छा, आप समझ रहे हो इसमें भी सिग्मा A कॉमा B है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो DFA है, पढ़ के बताना, DFA ये कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है? स्ट्रिंग्स विच एंड विद A, लास्ट लेटर शुड बी A, है ना? स्ट्रिंग्स विच एंड विद A. So write down this DFA accepts strings that end with A. Then L, language, ये डिफाइन कर रहे हैं ना हम, लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन इज A, BA। और बताओ कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे? लास्ट लेटर A होना चाहिए, हाँ, AAA, ओके, ये भी एक्सेप्ट होगा। अच्छा, ये होगा ABA, बिल्कुल होगा। AABA एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगे ना, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट लेटर शुड बी A। तो इनपुट जो हम दे रहे हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है, मेड अप ऑफ A B, ऐसे हो सकता है, देखो AABB, ऐसा स्ट्रिंग हम इनपुट तो दे सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है AABB, वो इसके लैंग्वेज में होगा क्या? नहीं होगा।
So what is that language accepted by DFA? It is set of all strings that are accepted by DFA. तो ये infinite string है, ये ऐसा चलते रहेगा. तो हमारे सब्जेक्ट में लैंग्वेज इज नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे सब्जेक्ट में लैंग्वेज इज दो स्ट्रिंग्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द मशीन. फिर से रिपीट करो, क्या बोला? व्हाट इज लैंग्वेज इन आवर सब्जेक्ट? Those strings that are accepted by the machine, all those strings that are accepted by the machine is called language. तो हम उसको set notation में लिखते हैं और लिखते हैं L, that language of this machine is these strings. तो ये देखने के बाद आपको समझ में आता है कि लास्ट लेटर शुड बी ए. करेक्ट? अच्छा, एग्जाम्पल 2, लैंग्वेज. जस्ट सी, सपोज आई हैव लाइक दिस Q0 A B Q2 A B B A. ये DFA मैंने दिया है और आपको पूछा है इसका लैंग्वेज क्या है. ये DFA का देखो, इनपुट अगेन कैन बी AB, सिग्मा इज AB हियर. और ये मशीन हमने देखा है द स्ट्रिंग्स विच कंटेन एटलीस्ट वन ऑकरेंस ऑफ AB. तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? सबसे छोटा स्ट्रिंग AB एक्सेप्ट होगा. अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रिंग होगा A B बिल्कुल होगा, इसमें भी AB है. अच्छा, ये होगा AB बिल्कुल होगा. ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगे ना, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑकरेंस ऑफ AB. अब बात को समझो, सारे के सारे इनपुट L में नहीं रहेंगे. कुछ इनपुट DFA रिजेक्ट करेगा, कुछ इनपुट्स DFA एक्सेप्ट करेगा. जो एक्सेप्ट करता है ना DFA, वही उस लैंग्वेज में होगा. आई होप यू गॉट दिस आइडिया. वी विल वाइंड अप टुडेज क्लास. आई होप इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. Some confusions might be there, but initially those confusions are always there as a beginner. We will work hard towards a greater solution of understanding these machines in our next YouTube lecture. Practice by that time. See you then.